Hello, my friends. So, we are solving the RGPV paper of May 2018, and today I am going to solve the question which is the first question, first A. So, it is quite a simple numerical, but let's just understand how to solve this numerical. Okay, so let's just start. So a reverse Carnot cycle has a COP of 4. Determine the temperature ratio of the cycle. If the power consumption of the cycle is 7.5 kilowatt, determine the refrigerating capacity in TR. Okay, so this question is based on a reversed Carnot cycle. Okay, so first let us understand what is a reverse Carnot cycle. ठीक है, हम सब ने Carnot cycle thermodynamics में पढ़ी है. ठीक है, reverse Carnot cycle. So we just see how this cycle looks like. So this is the TS diagram of a reverse Carnot cycle, and this is a and this is a PV diagram of a reverse Carnot cycle. Okay, so this on this diagram, इस diagram पे हमने arrow नहीं show कर रखे हैं. Okay, so if you make the arrows in the clockwise direction, then it will become a Carnot cycle. Okay, so if you move like this, then it will become a Carnot cycle. But if you reverse the order, okay, so I am using a different pen for this. So if you reverse the order like this, if you reverse the order like this, and then it will, let me clear all this. Okay, so if you reverse the order like this, then it will become a reversed Carnot cycle. Okay, so by just reversing the order, we can get a reverse Carnot cycle. So reverse Carnot cycle is a type of refrigeration cycle. Okay, we have different cycles in refrigeration. So it is a type of refrigeration cycle. Different cycles in refrigeration are like reverse Brayton cycle. Okay, reversed Brayton cycle. Okay, so we have different cycles in refrigeration, and it is a type of refrigeration cycle. It is exactly opposite to the Carnot cycle. Okay, so what are the steps which are performed in Carnot cycle? They are just the opposite. That process that involved in the Carnot and reverse Carnot are the same. The processes which are involved in the Carnot and the reverse Carnot cycle are the same, but the procedure is different and quite opposite to each other. Okay, so this is the first point. You keep remember this point. And the second point is the Carnot cycle is used to convert the heat into mechanical work. Okay, you have studied in the Carnot cycle what happens. The heat from a hot reservoir goes to an engine and it converted into work, and some of the heats get rejected into the atmosphere. Okay, so in Carnot cycle used to convert the heat into mechanical work, where the reverse Carnot cycle is used to absorb the heat from a system and reject to the surrounding to maintain the system cool. Okay, what happens in the reverse Carnot cycle? It takes the heat from a system. It takes the heat from a system and it rejects the heat to surrounding. Okay, so it suppose it takes the heat from a system which is at temperature TL, and it rejects the heat to a surrounding which is at temperature TH, and by doing so it needs some work. Okay, so and this heat which is taken out from a body, ठीक है, इस हीट को जो एक बॉडी से ली जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. ठीक है, रेफ्रिजरेशन अफेक्ट. ठीक है, तो हम इसमें प्रोसेस देख लेते हैं कौन कौन सी होती है. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस. ठीक है, इसमें 1 से 2, जो 1 से 2 है हमारी वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. 2 से 3 जो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है. 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, और 4 से 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है. ठीक है, तो इस कार्नोट साइकिल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है इस न्यूमेरिकल के लिए. और सीओपी क्या होता है इस एक कार्नोट साइकिल का? सीओपी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज reverse Carnot cycle is, it is TL divided by TH minus TL, where TL is the, ये जो है TL जो है हमारा लोअर टेम्परेचर, और TH हमारा क्या है? ये जो हायर टेम्परेचर है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल. इसमें हमें सीओपी दिया हुआ है. सीओपी कितना दिया हुआ है? हमें 4. और सीओपी होता है हमारा कितना है? सीओपी होता है TL अपॉन TH माइनस TL. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर का रेशियो निकालना है. टेम्परेचर रेशियो क्या हो जाएगा? TH माइनस TL डिवाइड बाय TL इज इक्वल टू 1/4. So this implies TH upon TL is equal to 5/4. ओके, तो टेम्परेचर रेशियो हमें मिल जाएगा. अब इसके बाद सीओपी का एक और रिलेशनशिप भी होता है, वो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन अफेक्ट. रेफ्रिजरेशन
अफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन या फिर पावर कंज्यूम्ड। ओके, सो रेफ्रिजरेशन अफेक्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन अफेक्ट इज टू बी रेफ्रिजरेशन अफेक्ट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और पावर हमें दी हुई है, कितनी पावर दी हुई है हमें 7.5 किलोवाट। ठीक है, और सीओपी हमें कितना दिया हुआ है 4। तो हमारा रेफ्रिजरेशन अफेक्ट कितना आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन अफेक्ट आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन अफेक्ट इज इक्वल टू 30 किलो वॉट। ठीक है, नाउ हमें रेफ्रिजरेशन अफेक्ट चाहिए किसमें है, टीआर में चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 टीआर इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या फिर 3.5 किलो वॉट। ठीक है, तो अगर एक टीआर में 3.5 किलो वॉट है तो 30 किलो वॉट में कितने टीआर हो जाएंगे, हम डिवाइड कर देंगे 30 को 3.5 से और हमें मिल जाएगा, इसे आप सॉल्व करके देखिए कितना आ जाएगा, 30/3.5 ये आ जाएगा 8.5 टीआर। ओके, सो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं आरजीपीवी में, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आरजीपीवी से रिलेटेड तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।